Hi everyone, how are you? Rana Sir is here. Welcome to our RANA SIR educational channel. Today I will talk on a topic whose name is Units and Measurement chapter. In this chapter, next theory I will explain in detail, and I am also going to tell you concentrate on this live video from starting to end to develop good knowledge on this topic. One additional information I am also going to tell you take one notebook and one pen and then you sit at your location properly, positively and safely, and you write all informations which are written on the blackboard, and you write all information which are spoken by me on your notebook for further revision that will enhance your future. Okay students, additional information I am also going to tell you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friend and student, and also you subscribe this educational channel more and more for getting such informations. Now I am also going to tell you, if you will have any confusion, so you write your information in comment section positively. I will look your comment and then I will reply positively. Okay student, so you follow positively from starting to end. Now I am going to start unit and measurement chapter next remaining concepts. Okay students, so you concentrate on here. First of all, I am going to explain that is unit and measurement chapter. This is the class 11 physics. Okay, students, so you concentrate here. So, in yesterday class, I have already discussed about you fundamental quantities, fundamental SI units, fundamental SI symbols, and also its corresponding dimensions. Okay, all in 7 fundamental quantities I have already discussed with you. Now here I am going to explain about the concept of derived quantities, derived formula, and also we will explain SI unit of derived quantity, and also I will write the conceptual, that is the dimensional formula of the derived quantity. Okay student, how if any derived quantity is available, so how we will get its dimension, all informations I will explain here in detail. Okay students, so you concentrate on this topic from starting to end for developing your knowledge on this point. This point means this chapter, that is units and measurement chapter, so you concentrate here. Now here next point I am going to tell you, that is derived quantities, DERIVED, derived quantities, derived quantities, quantities, comma, derived quantities. Derived quantities. I will explain derived SI unit, SI units, derived SI units and its dimension, and its dimension. So all dimensional, so formula या dimension. Okay, so all informations I will explain in detail. So here corresponding this topic I will draw a
table, and that table will be very very important because all informations I will add in this table. So you have to remember this table and how all derived quantities are written here. Corresponding derived quantity I will write their formula, and after writing formula I will write their derived SI unit, and then I will also write their derived uh, SI unit symbol, and then I will write their corresponding dimension formula. Okay, dimensional formula. So all information I will substitute in a particular table, and you read and you remember that particular table, because according to that particular table you can solve any question. If any question that is asked in your exam or in CBSE board or in UP board, so you can easily solve. So you concentrate here. I am going to make a table that is proper table. So first of all I write here serial number. Yes, there. Yes stands for serial and yes stands for number. So serial number. So here I will draw a column. So here I will write the right quantities. Derived quantities. DITES, derived quantities, and then I write here another column, derived SI unit. Yes, derived. Here I will put derived SI unit. First of all, I will write here formula, and then I will explain for derived formula. Derived formula. Derived formula. I will make a column, and then I will write here derived SI units. Derived SI unit I will put there, and then here I will write its symbol. 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 Here I have to write symbol, proper symbol, and after writing proper symbol, then I will write here dimensional formula. Dimensional for dimensional formula. Okay, in short form I have written the dimensional formula. Okay, so here I am drawing a horizontal line, and this table I will complete. So this is the table. In this table I will explain all derived quantities, and I will write here D stands for derived. So it is written in short form because here there is no space, therefore I am writing D, that is stand for derived formula. So I will take derived quantity, corresponding derived quantity I will write here derived formula, and then I will write corresponding derived quantity SI unit, and then I will also explain their derived SI symbol. Here I can write, because here is a space, therefore I am going to write derived SI for symbol. SYMBOL. This is derived SI unit and derived SI from symbol, and then dimensional formula. So here I am also going to write in here, that is dimensional formula. Okay, so each and every student has to prepare this table. This is unique table because all information I will explain here, because
In book all informations are available, but in isolated locations are available. But here all information I have composed here at one place, because here I will take serial number, so derived quantity I will write, and corresponding derived quantity I will substitute here formula, derived formula, and then I will write here derived SI unit, and then here will be derived SI symbol. In symbol form I will also write, and then I will find its dimensional formula. So dimensional formula can be calculated separately. I will calculate, and then I will explain how the derived formula is obtained, because yesterday I have already explained you about the concept of fundamental quantities and fundamental units, and also fundamental dimensional formula. So all information I have taught you yesterday. So those information I will use here for making derived quantity and its derived unit, and also its derived symbol, and I will also explain the concept of dimensional formula. So all information I will explain here in detail. Okay students, so you concentrate on this topic from starting to end. So any derived quantity will be in front of you. You can also say easily what is the derived formula and what is the derived SI unit, and then you can also write this derived SI symbol, and also you can write derived SI in the dimension of the formula, or yeah, dimension of the derived quantity, yeah, dimensional formula you can also write there. Okay student, so this information will be understood by a CBSE board student, that is student who are reading in English medium, but I am going to also translate in Hindi medium, because UP board student and a CBSE board student both can easily understand it. नाउ हियर आई एम गोइंग टू टेल, जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है व्युत्क्रम क्वांटिटी। डिराइव्ड का मीनिंग होता है व्युत्क्रम क्वांटिटी, क्वांटिटी का मीनिंग होता है मापन। ये डिराइव्ड मापन, और ये जो होता है डिराइव्ड रास। डिराइव्ड क्वांटिटी का मीनिंग होता है रास। डिराइव्ड क्वांटिटी का मीनिंग होता है व्युत्पन्न रास। और व्युत्पन्न राशि का एसआई यूनिट क्या होता है, और इसका डायमेंशन का मतलब होता है इसका बीमा क्या होता है। तो जो भी व्युत्क्रम क्वांटिटी है, उस व्युत्क्रम क्वांटिटी का जो व्युत्क्रम एसआई यूनिट को लिखेंगे, और व्युत्क्रम एसआई यूनिट को लिखने के बाद से हम उसका विविध सूत्र को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में सबसे पहले रिप्रेजेंट किया है एसएन। एस स्टैंड फॉर सीरियल नंबर। सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एन जो होता है नंबर को रिप्रेजेंट, सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका हिंदी में जो होता है अनुक्रमांक करते हैं। उसके बाद से यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटी लिखा गया है। डिराइव्ड क्वांटिटी का मीनिंग यह होता है कि इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्युत्क्रम राशि क्या है। व्युत्क्रम राशि, यहाँ पर व्युत्क्रम राशि को लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो होता है व्युत्क्रम फार्मूला लिखेंगे। ये डिराइव्ड फार्मूला का मीनिंग होता है व्युत्क्रम सूत्र लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग व्युत्क्रम सूत्र लिखेंगे। उसके बाद से डिराइव्ड एसआई यूनिट है। यहाँ पर डिराइव्ड एसआई यूनिट का मीनिंग होता है कि यहाँ पर डी स्टैंड फॉर व्युत्क्रम। व्युत्क्रम एसआई यूनिट, व्युत्क्रम एसआई यूनिट का मतलब मात्रक। व्युत्क्रम एसआई यूनिट का जो मात्रक है, उस मात्रक को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पर यूनिट का मीनिंग होता है मात्रक। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है डिराइव्ड एसआई सिंबल। उसका जो व्युत्क्रम एसआई सिंबल है, संकेत है। सिंबल का मीनिंग होता है संकेत। इस संकेत को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद से डायमेंशनल फार्मूला लिखा गया है। डायमेंशनल मतलब होता है विमित सूत्र। फार्मूला का मीनिंग होता है सूत्र। ये विमित सूत्र को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी व्युत्क्रम क्वांटिटी दिया जाएगा, जो भी व्युत्क्रम राशि है, उस व्युत्क्रम राशि का जो व्युत्क्रम एसआई यूनिट है, उस एसआई मात्रक को रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। मात्रक को दर्शाने के बाद से उसके संकेत को भी रिप्रेजेंट करेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने के बाद से, दर्शाने के बाद से जो विमित सूत्र होता है, उस विमित सूत्र को भी हमें रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये मात्रक और मापन में जो होता है ये सारा इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन किया जाता है। क्योंकि हम कल के अध्याय में पढ़ चुके थे कि सबसे पहले हमको एक्सप्लेन करना था
कि मूल राशि क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है, उसका बीमित सूत्र क्या होता है, उनको हम एक टेबल बनाए थे। उस टेबल के अकॉर्डिंग जो होता है हम एक्सप्लेन किए थे, व्याख्या किए थे। लेकिन यहाँ पर जितने भी राशि होंगे वो सारे राशि व्युत्क्रम राशि होते हैं। उस व्युत्क्रम राशि का फार्मूला सूत्र क्या है, उस सूत्र को लिखेंगे। उसका एसआई मात्रक क्या है, उस व्युत्क्रम राशि का एसआई मात्रक लिखेंगे। और उस व्युत्क्रम राशि का जो मात्रक है उसका सिंबल फॉर्म में क्या लिखेंगे, और उसका विमित सूत्र है, उस विमित सूत्र को भी रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आप इजीली समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन डिराइव्ड क्वांटिटी. So here I am going to take serial number. I am going to take serial number 1. So here serial number 1 I am going to take volume. VOLUME, volume. Now it has formula. Volume has formula V is equal to length into width into height. दिस इज द फार्मूला ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। और इसका यूनिट हमको लिखना है, तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, इसलिए हम लिखेंगे मीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ हमको here I will understand if any container which has length, breadth, height, so I will calculate length in meter, and also breadth I will also calculate in meter, and height will also calculate in meter. So this formula will be valid, because if any length will given in centimeter and other length will given in meter and other length will given in kilometer, so all length I will change in a particular unit, in meter or centimeter, okay, or kilometer, and then I will simplify. After simplifying I will get the answer. If I will not change the unit, so its calculation will be wrong. Therefore its symbol, so SI unit, derived SI unit is meter cube. Now it derived SI unit in symbol I will say em cube. This is meter has symbol m. Meter has symbol m, so it has power 3. So I have kept here power 3. Okay. Now here I will write dimensional formula. Now this is the meter, and meter height dimension is that I have already tell you that dimension of meter is L, but it has power 3, so I will put here power 3. Now this volume has no mass, so I will put here the it has no mass, so I will put here at the place of mass, that is kg, it has power 0. Means if any value I will take and its power will I will put it 0, so its value will be 1. So in the place of 1 I can put m to the power 0, because m in the dimension m, l and t will be necessary to write. So m is absent, so I can put here m to the power 0. Now t is also absent, so I can put here t to the power 0. And each and every dimensional formula is written in the big bracket, so you follow it. So the dimensional formula can be written in this form: m to the power 0, l to the power 3, and t to the power 0. So this is the derived quantity, and derived quantity here I have taken volume of any container which has length L and breadth B and height H, and all are calculated in meters. So its SI unit will be derived SI unit will be meter power cube, because length is also calculated in meter, and breadth is also calculated in meter, and height is also calculated in meter. So meter into meter into meter, so meter to the power 3 I can write. Now its symbol will be m, so it has power 3, so I can put here 3. Now m has dimension l, because yesterday I have already taught you if any length is calculated in meter, so its dimension will be m. So I can put here m to the power 3, because m has power 3, so m will have
power 3. So now here m is absent and t is absent. So in the place on the power of m I will take 0 and t to the power 0 I can take, because any variable which has power 0 its value will be 1. So I can arrange like this. Okay student, because in the dimension you have to mention m to the power, if m is absent so we can put there m to the power 0, and L has power 3 so I can put there L to the power 3, and T has power T is absent so I can also put there T to the power 0. So this is the process and you have to write. Okay student, now next I am going to calculate derived quantity like area. So second point I am going to put here area. This is the derived quantity. So area has formula A is equal to length into breadth. Length into breadth. Because if I will calculate the area of any shape and that has only length and breadth, so I will say that is available in two dimensional, because this is the breadth and this is the length. So this is the rectangle and the rectangle will have area length into breadth. So length is also calculated in meter and breadth is also calculated in meter. So this SI unit will be meter square. So here I will write meter square. Okay students, if you are getting any confusion, so you write your confusion in the comment section. Positively I will look and then I will explain all those information in detail. Okay, so area is equal to length into breadth and it is also calculated into meter square. So I can put now this meter has symbol m, so I can put here symbol m to the power 2 because it has power 2, so I can put there m square. Now next I have to write its dimensional formula. So dimensional formula I will put, because m has dimension l, so I will put there l, but m has power 2, so I will put here 2. Now m is also at absent, so I can put m to the power 0, and here the t is also absent, that is I will put t to the power 0, because if any variable which has power 0 so that will have value 1. So in the place of 1 we can also arrange like this m to the power 0 and t to the power also 0. Okay, that is also dimension less value. Okay, so we can also arrange like this. So this table you have to remember. Okay, now I am going to take another derived quantity and how we will evaluate the SI unit and also SI symbol, and also we have to find the dimensional formula. Now here I am going to take pressure. Pressure PREWSUL pressure is represented with P, and its formula is P is equal to F divided by A. So here we can write pressure. Pressure has, this is the 3. Here I will write pressure PRESSURE. This is the pressure. Now it has formula P is equal to F divided by A. F stands for force and A stands for area. Now its SI unit I will write here. F is written as Newton divided by meter square. Area is also calculated Newton into meter square. But in the place of n we can write kg meter per second square. So meter will cancel out, so I can write there kg meter power minus 1 into second to the power minus 2. We can also write like this. This symbol I can also arrange like this. Now I am going to evaluate its symbol and then I will write. So this F is written as F is equal to M into A divided by area is meter square. This is the meter square. Now this is the mass, so its value will be kg, and this is the A stands for acceleration, so I will put there A acceleration is meter per second square.
and value is also available as a meter square. So 1 meter will cancel. So I will simplify. After simplify, I will write kg into meter power minus 1 into second to the power minus 2. So pressure has this SI unit. This is also SI unit, or we can write SI unit can be written as kg meter per power minus 1 meter per power minus 1 into second to the power minus 2. Okay, now its symbol. This is the symbol. This is the Newton per meter square, but it is the symbol I have written there. So this is the information, and you have to know pressure is equal pressure stands for pressure is denoted by P, and P is equal to F divided by A. F is the force, and force is written as m into a. M is the mass of the object, and A is the acceleration of the object, and A is the area of that object. Now mass is also written as kg. This is the SI unit kg, and acceleration is written as meter per second square, and here m square is also available, that is area is also available m square. So 1 m will cancel out, so here will be kg, and this m power 1 is available downside, so it will go upside, so it will have minus 1 sign. But here the second square is available in downside, it will go upside, so I can put there s to the power minus 2. So this information I will arrange there. Now I have to write its dimensional formula. So dimensional formula will be very easy, because dimension of kg is written as capital M, so I will put here capital M. So dimension of kg is capital M, and L, this M is represented by length, and its value will be L. So it has power minus 1, so I can put there minus 1, but here S stands for second, and second is represented. Second has dimension T, so I will put here T, and it has power minus 2, so I will put there minus 2. And dimensional formula is written in Greek bracket, and that formula I will write there. So here I have to write its dimensional formula, so you can also remember it. So a to the power 2, T to the power 0. Now the value pressure has here to the power 1, a here to the power minus 1, and T to the power minus 2. Okay students, so I have also written here the dimension of the pressure. Dimension of the pressure is m to the power 1, l to the power minus 1, and T to the power minus 2. Okay. If any derived quantity is given, so all derived quantity you can also write like this. First of all, you have to write derived quantity name. Here I am going to put name, derived quantity name. This is the derived quantity name, and this is the derived formula. I have written here pressure P is equal to F divided by A, but derived SI unit is Newton per meter square. In symbol form, I have also written here kg meter of m per power minus 1 and s per power minus 2, but its dimensional formula I have also written here m to the power 1, m to the power minus 1, and t to the power minus 2, because I have calculated with formula by this way, because I have already taught you studied 7 fundamental quantities, and all fundamental quantities here I am using, because kg is also written there. That is the SI unit of mass. Mass has kg, and kg is represented as dimension capital M, and meter is also written as symbol M, and it has dimension L, so it has power minus 1, so I have written here power minus 1, but yes, it is written as second, and its dimension will be t, because it has power minus 2, so I have written here minus 2. So this formula, dimension formula, I have written here according to table. Okay student, if you are getting any confusion, so you write your information, your query, your question
or any doubt in the comments section, positively I will look your comment and then I will explain the solution of your comment positively. Okay student, now these are the information who are reading in English medium. Now here I am also going to tell this information in Hindi medium so each and every student can understand easily. Now यहाँ पर एक टेबल बनाया है, इस टेबल में जो होता है सीरियल नंबर लिखा गया है, इसमें व्युत्पन्न राशि का नाम लिखा गया, व्युत्पन्न राशि का नाम, यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और प्रेशर का मीनिंग होता है दाब। इस वॉल्यूम का आयतन, यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला लिखा गया है, डायमेंशनल डिराइव्ड फार्मूला, डिराइव्ड फार्मूला का मतलब होता है व्युत्क्रम सूत्र, यहाँ पर व्युत्क्रम सूत्र लिखा गया। यहाँ पर आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जो होता है अगर एम के सिस्टम में लेते हैं तो यहाँ पर जो होता है लेंथ को भी मीटर में कैलकुलेट करेंगे और ब्रेथ को भी मीटर में कैलकुलेट करेंगे, हाइट को भी मीटर में कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर पर पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि मीटर इंटू मीटर सब पर पावर जो होता है 1 पावर होगा, उस पावर को जो होता है हम ऐड करेंगे। यहाँ पर मीटर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो इस मीटर पर पावर 1 है, मीटर पर पावर 1 है, पावर 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो मीटर पर पावर 3 हो जाएगा। इसको मीटर को हिंदी में हम मीटर को इस तरीके से लिखते हैं, मीटर, इस पर पावर 3 है तो पावर 3 कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर सिंगल फॉर्म में लिखा जाएगा तो पावर 3 यहाँ पर भी लिखेंगे। उसके बाद से ये जो होता है व्युत्क्रम एसआई का ये संकेत है, तो इस संकेत के फॉर्म में लिख लिए। उसके बाद से डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला को हम हिंदी में विमीय सूत्र करते हैं। इस विमीय सूत्र के को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लेंथ भी मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है और भी मीटर में, तो मीटर क्यूब हो गया। यहाँ पर मीटर का जो डायमेंशन होता है, जो बेसिक राशि का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है। यहाँ पर पावर 3 है तो एल पावर 3 हो गया। यहाँ पर जो होता है यहाँ पर एम जो होता है एब्सेंट है तो एम को पावर 0 रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को अगर पावर 0 होता है उसका मान जो होता है हमेशा 1 होता है। तो इसको हम इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्योंकि एम को पावर 0 इसका वैल्यू 1 होगा। किसी क्वांटिटी या किसी इंफॉर्मेशन में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। इसी तरीके से टी का पावर 0, इसका मतलब टी जो होता है इस फॉर्मूले में एब्सेंट है, इसलिए टी को पावर 0 रख दिए, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेम होगा, इसलिए हम इस इंफॉर्मूले को पावर 3 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। ओके, इसमें एक इंफॉर्मेशन और है कि जो विमीय सूत्र लिखेंगे वो विमीय सूत्र को बिग ब्रैकेट के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। ओके, उस दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया एरिया। एरिया का मीनिंग होता है क्षेत्रफल। अगर वो क्षेत्रफल या तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे या वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर वर्ग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उस केस में लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ का मतलब होता है लंबाई और ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लेंथ को भी मीटर में कैलकुलेट करेंगे, ब्रेथ को भी मीटर में कैलकुलेट करेंगे। मीटर इंटू मीटर, मीटर पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इसलिए मीटर पर पावर 2 हो गया। इसको संकेत में एम लिखेंगे और इसका डायमेंशन सूत्र लिखेंगे तो हम एल मीटर का जो होता है एल होता है, यहाँ पर पावर 2 है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम विभिन्न सूत्र में जो होता है अगर एम और टी नहीं होता है तो उसके लिए हम अरेंज करके लिखेंगे एम को पावर 0 और टी को पावर 0, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। हम जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल मतलब कोई भी चर क्वांटिटी होता है ए से जेड तक कोई भी हम ले सकते हैं, वो चर होता है उसका मान जो होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में होता है। तो अगर उसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। सो 0 भी जो होता है माइनस यहाँ पर 1 जो है 1 भी जो होता है माइनस अनंत और 1 के बीच में अनंत के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो ये इंफॉर्मेशन होता है करेक्ट है।
तो इसलिए जो होता है इसका जो होता है हम एरिया का मतलब क्षेत्रफल का डायमेंशन हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं, एम पावर 0, एल को पावर 2 और टी को पावर 0। ओके स्टूडेंट, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। दिस इज फ्री ऑनलाइन क्लास एंड यू टेक इट्स एडवांटेज। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि टेंथ क्लास टेंथ के मैथ और साइंस और क्लास 11th 12th का मैथ और साइंस ऑलरेडी हम बना के अपलोड कर दिए हैं प्ले लिस्ट में, आप जाकर वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सारा इंफॉर्मेशन जो होता है पब्लिकली है, आप इजीली ऑफ पढ़ सकते हैं और फिर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस से आप इसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। ये जो होता है हम क्लास स्टार्ट करते हैं 30 मिनट पास टू 7 PM टू 30 मिनट पास टू 8 PM तक हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में जो होता है ये ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस होता है और इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर यू। ओके, यहाँ पर जो होता है हम क्वांटिटी नेम लिए हैं, मतलब व्युत्क्रम राशि का नाम लिए हैं। व्युत्क्रम राशि का नाम है प्रेशर। प्रेशर का हिंदी होता है दाब। ये दाब होता है, दाब का क्षेत्रफल, दाब को रिप्रेजेंट के दर्शाया जाता है पी से, और पी बराबर होता है एफ बटे ए। एफ जो होता है उसको बल को रिप्रेजेंट करता है, ए जो होता है किसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो एफ जो होता है हम जानते हैं कि एफ बराबर एम ए न्यूटन का सेकेंड लॉ। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ? न्यूटन सेकेंड लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration of a body is called the Newton second law, and its unit will be Newton. Its unit will be Newton, and it is also written as kg meter power -1 and second power -2। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम दर्शा सकते हैं कि प्रेशर पी बराबर होता है एफ बटे ए। एफ जो होता है बल रिप्रेजेंट करता है, ए जो होता है एरिया को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं बल न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है, सेकेंड नियम होता है। दूसरा नियम होता है एफ बराबर एम में, एम डिस्टेंस पर होता है, क्योंकि मास को केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सीलरेशन जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नीचे एरिया का एरिया दिया गया, एरिया को भी कैलकुलेट करते हैं मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केजी बचेगा, यहाँ पर 1 बटे एम पावर 1 होगा, ऊपर जाएगा एम को पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 1/s स्क्वायर, 1/s स्क्वायर ऊपर जाएगा एस को पावर -2 होगा। इसका डायमेंशन अगर विधि सूत्र लिखेंगे तो केजी को हमेशा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम को हमेशा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पावर -1 है तो -1 को सब्स्टिट्यूट किए, और एस जो होता है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसका पावर -2 है तो -2 वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये इंफॉर्मेशन जो विधि सूत्र मिला है उस विधि सूत्र को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ओके स्टूडेंट, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें और अपने डाउट को एक्सप्लेन करें। मैं पॉजिटिवली उस डाउट को स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद से पॉजिटिवली हम रिप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने कलीग्स फ्रेंड और स्टूडेंटों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट पर अपडेट और डेवलप हो सके। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी को सपोज कीजिए कि हम डेंसिटी लेंगे, घनत्व लेंगे। ओके, तो घनत्व के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए उस इंफॉर्मेशन को भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद से उसको टेबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वांटिटी जो होता है फोर्थ क्वांटिटी को हम डेंसिटी लेते हैं। डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी जो होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी को यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटी को डेंसिटी के रूप में लिखेंगे और फार्मूला डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मास बटे वॉल्यूम होता है। मास को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से, और वॉल्यूम को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, इसलिए हम करेंगे इसको मीटर क्यूब होगा। इसको हम मीटर क्यूब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम एसआई यूनिट करेंगे, डिराइव्ड एसआई यूनिट करेंगे। डिराइव्ड एसआई यूनिट क्या होगा, केजी बटे मीटर क्यूब होता है, बट इसको सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, केजी किलोग्राम। इसको केजी को लिख सकते हैं किलो ग्राम।
किलोग्राम डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब, ये दिखता है डिराइव्ड एसआई यूनिट का, ये डिराइव्ड एसआई यूनिट हो गया किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। बट इसको सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, और मीटर 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 को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका पावर 3 है तो 3 लिखेंगे, तो होता है डिराइव्ड एसआई यूनिट का सिंबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर स्टूडेंट कहेगा इसका डायमेंशन लिखिए तो डायमेंशन लिखने के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि केजी को हम जानते हैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मीटर को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका पावर 3 है तो इसका पावर 3 लिखेंगे। इसको और अरेंज करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर 1 लिखेंगे, यहाँ पर पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर पावर -3 क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा, पावर 3 -3 हो जाएगा। यहाँ पर टी एब्सेंट हो तो टी भी लिखेंगे, उसके पावर 0 कर देंगे, उसका वैल्यू 1 होगा। तो इस तरीके से डेंसिटी का अगर डायमेंशन लिमिट सूत्र कहा जाएगा तो यहाँ पर पावर 1 यहाँ पर लिख सकते हैं, एम का पावर 1, एम का पावर 1, एम का पावर -3 और टी का पावर 0। इस तरीके से हम डायमेंशन लिख सकते हैं। तो इसमें जो होता है हम इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद से हम इसको इस टेबल में ही हम डेंसिटी का ऑल इंफॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए अगर टेबल के फॉर्म में हम सारा इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो हमें इजी होगा उसको स्टडी भी करना और उसको फाइंड आउट भी करना। तो ये पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डी इज इक्वल टू होता है, इसको डिराइव्ड फार्मूला लिखेंगे तो डेंसिटी जो होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है। लेकिन यहाँ पर डिराइव्ड एसआई यूनिट लिखना है, डिराइव्ड एसआई मास को हम हमेशा किलोग्राम से लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे मीटर क्यूब, किलोग्राम डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब। अगर हमको सिंबल के फॉर्म में लिखना है डिराइव्ड एसआई यूनिट को सिंबल फॉर्म, किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका पावर 3 है तो एम क्यूब करेंगे। और इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो डायमेंशन फार्मूला केजी के लिए एम लिखते हैं, केजी के लिए एम लिखते हैं और एम के लिए एल लिखते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, एल को पावर -3 होगा। इस फार्मूले में जो टाइम जो होता है एब्सेंट है, इसलिए T⁴ लिखेंगे, और जब डायमेंशन लिख लेते हैं उसके बाद इसको बिग ब्रैकेट के अंदर में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ताकि हम डायमेंशन लिमिट सूत्र को हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। ओके, अगर यम सिर्फ यम है तो इसका मीनिंग होता है तो पावर कितना है, 1 है। ओके, इस डेंसिटी का इंफॉर्मेशन जो होता है, अगर इंग्लिश में बोला एक्सप्लेन करना है तो हम कहेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास इज रिप्रेजेंटेड इन किलोमीटर एंड वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड इन लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एंड ऑल लेंथ विल be calculated in meter and breadth will also be calculated in meter and height will also be calculated in meter. So meter into meter into meter, so that will be meter cube. So kilogram has symbol kg and meter has symbol m and it has power 3, so I will put m to the power 3. Now I have to write next its dimensional formula. So dimensional formula can be written as m stands for capital M and m is small m stands for m. So it has power 3 and it will go upside, so it will have power -3, and in this formula t is absent, so in the place of t I will put there 0. Okay student, so easily you can understand it. Okay, so this is the information. Yeah, these are the information. According to the information, any derived quantity is available, so you can easily write the formula of that derived quantity, and then you can also write SI unit of that derived quantity, and then you have to put also symbol of that SI unit, derived SI unit, and then you have to write dimensional formula of that derived SI unit. Okay,
So these are the information, and all these information you have to explain easily and clearly. Okay, student, if you have any doubt, so you write your information in the comment section, and positively I will look, and then positively I will give the solution of your question. Yeah, doubt or query or any issue of your question which is related to uh, unit and measurement chapter. Okay, student, so positively you have to follow it. Positively you have to take it in these informations. Okay, now I am going to erase this table, and I will also explain some information which is related to MK system, CG system, and also FTS system. Okay, student, you have to follow it positively. Now further I am going to erase this one, and after erasing this, and I will solve, I will apply four operation, algebraic operation on the given question, and then we will solve properly. So you concentrate on this topic easily. First of all, I am going to erase any information on the blackboard, and then I will write. Suppose that if any information is given in find the value in meter, find the value in kilometer, find the value in kilometer. Some data are given below. Data are given there. Okay, suppose that we have to write 255 meter, and one is a level 106 centimeter. We have centimeter. We have to take its solution. We have to take its solution in kilometer. In kilometer. So first of all, this value I will change in kilometer, and then I will take its solution. Suppose that I know 1 meter or 1000 meter, which is equal to 1 kilometer. So 1000 I can write 1000 over 1 meter, which is equal to 1 kilometer. So 1 meter, which is equal to 1 divided by 1000 kilometer. So its value will be 0.001 kilometer. So 1 meter, which is equal to distance, and this is given by scientists of all countries. So that is known as SI unit. So similarly, I will also find in centimeter. So I know 100 centimeter, which is equal to 1 meter. In the place of 1 meter, I can write that. So here I am going to simplify. So 100 centimeter, in the place of 1 meter, I can write this 1.001 kilometer. So again I can write 100 into 1 centimeter, which is equal to 0.001 kilometer. Now again 1 centimeter, which is equal to 0.001 kilometer,
divided by 100. Again it will have two zeros left. So 1 centimeter, which is equal to 0 point, it will have 4 zero, 0 0 0 0 1 kilometer. So this value I have to substitute here. Okay. So I will convert it in kilometer. So if 255 into 1 meter I can write, and place of 106 I can write 1 centimeter. Okay. So value of 1 meter, value of 1 centimeter I can substitute here, and after substituting I will solve its value. Now here I can write. Now student, it is important point, and you all this information on your notebook for further revision, because students are knowing 1 meter, which is equal to 0.001 kilometer. How it is coming, I have solved all information here. Now I know 100 centimeter, which is equal to 1 meter. In the place of 1 meter I can write this one, and after writing this one, so I know 100 centimeter can be written 100 into 1 centimeter. 100 will be divided here. 1 centimeter is equal to this one. After simplify I will write, because here 2 zero is available, 2 zero is also 4 zero will be here, 0.0000001 kilometer. So all these information, because 255 1 I can write, because if I will multiply 255 after multiplication with 1, after multiplication with 1, I will get same value. Again 106 I will multiply with 1, after multiplication I will get same value, that is 106. So further I will add it. So after substituting this value, and after simplifying, and then I will add. Okay student, now here I am going to erase, because there is no space, so I will erase here, and after erasing I will solve properly. So here I am going to write here 255 into 1 meter. 1 meter is equal to 0.001 kilometer, because all dimension will be in same, all quantity will have same dimension. So 106 into, in the place of 1 centimeter I will put like this, 0.40000001 kilometer. So I will simplify. After simplify I will get this value. So here I will say, here I have to take its sum. So first of all I will solve it. So it will have after 3 digit points, so I will write like this, 2.55, this is in kilometer, and here I will say it will has 1 2 3 1 2 3. So here 1 2 3 4 5. So here I will write 1 2 3. So 2 0 I will also substitute here. So 1 1 0 6, and here will be 5. 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 5. So here it will be in kilometer. Okay student, now further, if after decimal point, if there is need 0, so you can put here 0, there is no any issue. So here again, because this is also in kilometer and this is also in kilometer, so addition can be possible. So 6 plus 0, that will be 6, and 0 plus 0, that will be 0, 5 plus 1, that will be 6, 5, here will be 2, and then I will put here point, and then I write the 0, so it will be in kilometer. So my question was that, find the values in kilometer are given below. So according to the data I have got, its sum, that is 0.25606 kilometer. So this is the answer of the written question. So this is the required way. According to this way you have to solve. If
If you will not follow this procedure, so your addition, subtraction, multiplication will be wrong. So you have to follow this positive concept for getting good marks in your exam. Okay, student. So this is the information, and these informations are already available in units and measurement chapter. Okay, student, if you are understanding very well, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also improve their knowledge on this topic. And possibly you subscribe this channel more and more. Channel name is Rana Sir UP Kushinagar. Okay, student, if you are getting any confusion, so you write your confusion positively in the comment section, and then I will explain your issue, your doubt, your any query which is related to unit and measurement chapter positively. Okay, student. So this is the free online coaching classes, and you take its advantage more and more. Okay, student. Thank you for watching this live video. Always I will be online from 30 minutes past to 7 p.m. to 30 minutes past to 8 p.m. Thank you for watching. Jai Hind. Rana sir, tomorrow I will meet with you on the same time. Thank you for watching this live video. Thank you, Vivek sir. Thank you, Siddiqui sir. Thank you for watching this live video.